की हालचाल? Awesome! Well, you seem to have like a fall that kind. Bring everybody together. How long did it take to build the identity you have in the biking community? And what is that one factor that makes you lovable amongst all the bikers around India? Great question. And first of all, I would answer it, but पहले मुझे ये बताओ कि मेरी वीडियोस कौन-कौन देखता है? So all these lovely people out there, they know my journey from the scratch. Scratch बोले तो I have the RX-100 जिससे मेरा biking start हुआ था. So this is the most special bike in my collection. It's my father's bike and recently we got it customized, restored. So मेरा biking का journey actually में यहाँ से start हुआ था, but on a digital platform, let's say content creation. I started in 2016, October or November. So it's been 6 or 7 years as of now. I'm producing content for YouTube and Instagram as well. And journey, as you guys know, I started from here. It took me 5 years to reach Nilima. And एक बार जोरदार तालियां हो जाए नीलिमा के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरी कंट्री में बहुत सारी हाइबुसा है, पर इससे फेमस कोई भी नहीं है. Yes, तो एक बार और से हुटिंग हो जाए नीलिमा के लिए. नीलिमा रॉक, नीलिमा फॉरएवर. So मैं लास्ट टाइम भी था इंडिया बाइक वीक में, which was happened in different location. उससे पे मैंने डायलॉग मारा था, I presented my 5 bikes. तो मैंने डायलॉग बोला था, किसी को याद है? पाँच साल लगे थे एक बाइक खरीदने में, 1 साल में 5 बाइकें खरीदी. तो वो डायलॉग ऐसा था कि पहली बाइक लेने में मुझे 5 साल लगे थे, अभी मैं 1 साल में 5 बाइक खरीद लेता हूँ. So it's not my attitude, it's not arrogancy that I want to show how much money I have. It's for you guys that you made my dream possible. And this is all because of your support. तो एक बार हो जाए तालियां आप सबके लिए. That is the reason I call my lovely people, because you are there to support me everywhere. Just like here as well, physically, digitally, you are there. Thank you guys. Thank you for supporting. And yes, Hey buddy, so that's amazing that you have so many people who love your content and the way you put this experience together for them. So tell me, यहाँ पे आपके 6 बाइक्स हैं, Right. और आप अपने बाइक्स के नाम रखते हैं. right. एक एक करके नाम सुना दीजिए और उसी बिल्कुल. एक लाइन में उसके पीछे कहानी क्या है वो बता दीजिए. देखो जी, इसका नाम तो हम नहीं चेंज कर सकते बिकॉज दिस इज अ लेजेंड. This is Papa. तो पापा की परी, आपने मेरी परी देखी है, कहना परी 2.0 देखी है, बट ये है पापा की परी. एंड द नेक्स्ट बाइक व्हिच आई हैव इज दुकाती V4S. सिंड्रेला तेरे पीछे आया. सो इससे इटालियन ब्यूटी है, आप सबको पता है दुकाती जो बाइक बनाता है ना, वो बाइक नहीं रह जाती, वो बाइक की फरारी हो जाती है. So this is one of the most beautiful bike in my collection. And then again, no introduction needed for Nilima. So it's a 2015 limited edition. इसको 60,000 से ज़्यादा किलोमीटर मैंने चला दिया है. You name the difficult terrain in India, and I have covered that on this motorcycle. That is Kashmir to Kanyakumari. I have taken it to Ladakh many times, Spiti many times, Zanskar Valley. आपने शिमला का सुना का difficult है, but I recently did it. In fact, मैंने अभी इंडिया भी किया on that S1000 RR. I've done it to Bhutan. I've taken it to Nepal. 60,000 kilometers of memory, lovely memories, memories forever. And then again, no introduction needed here as well. This is one of the fastest production motorcycle on the world. This is the mighty S2. कुछ लोग इसको S2R बोल देते हैं because इसको मैंने mod इस तरीके से करता है. I have loaded it with all of carbon parts. Most of the parts are carbon, and even you can see the winglets here on the top and at the bottom also. So इससे लोग धोखा खा जाते हैं. मेरे को बोलते हैं पाजी आपके में S2R है, तो मेरी छाती ऐसे छोड़ी हो जाती है. और मैं ये वाला झूठ एक्सेप्ट कर लेता हूँ. हाँ है. Anyways, and then again we have this beautiful bike which is from the adventure category. This is BMW 1250 GSA limited edition. ये मैंने ली थी last year, and this is my latest bike here. अब what's special about this S1000 RR is again, ये S1000 RR नहीं है, ये है M1000 RR. ये
इंडिया की एक लौती M1000 RR रेप्लिका है. अगर मैं बोलूं 50th एनिवर्सरी एडिशन, तो ये जो कलर है, दिस इज वेरी स्पेशल. दिस इज पीलेबल पेंट. दिस इज नॉट अ रैप, बट इट लाइक पील्स ऑफ लाइक अ रैप. अगर आप इसको हटाना चाहते हो, ये रैप की तरह हट जाता है. So this is a special color. इसको बोलते हैं Sao Polo Yellow, and I don't think so you will find the same bike in the country with the same color, which is kind of a replicate of M1000 RR 50th anniversary edition. So this is all about my current machines. And नाम की बात अगर एक बार दोबारा से करें, Cinderella, Nilima, H2 is H2. Then again, anyone for this? तूफान And what about that? पिकाचू चलो इस अच्छे ओकेजन ऑफ इंडिया बाइक वीक पे, ऑल्दो मैंने ऑफिशियली अपनी S1000 RR का नाम नहीं रखा था, बट टुडे ऑनवर्ड्स वी गोना ऑफिशियली कॉल हर पिकाचू, बिकॉज़ पिकाचू जैसे दिखती है, राइट? So this is nice, guys. This is it. Amazing, amazing. So interesting to know that each of your bikes have a name, a story, and each of your fans and your people who love your dog identify with one of them, and they must be sending you a lot of respect, with every story that you share with them. One last thing, because when you have a motorcycle, you gotta have a ride journey plan, right? Keep riding all over the country. अब आपकी next जो ride है, वो कहाँ पे? Honestly speaking, I have done a bit of Northeast. I went to Guru Doma, that too on the Hayabusa. So this time I want to do the entire Northeast. Means I want to do Mizoram, Meghalaya. I want to go that side. Even Tawang is on my list. So hopefully January I'll be there. So I'm planning making the next plan for Northeast. So अगर आप लोग इनको फॉलो करेंगे तो you will also get to see the Northeast like never before. Because you have an interesting take on how you present your show and how you bring the experience to viewers. And अगर एक चीज इनके बारे में जो आपको बहुत पसंद है, जो इनकी टैगलाइन है या इनकी जो स्लोगन है, वो क्या है और क्यों आप इसे पसंद करते हैं? भाई इन्होंने दे दी दिया. आप मेरे शो पे जरूर आना, आपको हम अपना लाइसेंस की रिलीज देंगे. So one helmet for you, man, from Exxon. Yes. And right. Tagline मैं सुनाऊंगा, मेरे स्टाइल में एक बार फिर से हो जाए, because last वाला IBW रील सबने देखा होगा, तो उसमें कुछ हमने इंट्रो ऐसे ही दिया था, right? Yes. Alright guys, थोड़ा अपना शक्ल वगैरह ठीक कर लो, क्योंकि you're going to be on camera and you need to look your best. Come on, जो भी लगाना है जल्दी लगा लो. Come on. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं. सबके पास फोन है, बस एक बटन दबाओ, फ्लैश लाइट ऑन करो, सब ऐसे, ठीक है? फेसिंग मी, फ्लैश लाइट. What's up, you beautiful people? की हाल चाल? सत श्री अकाल की हाल चाल? सत श्री अकाल How's the joy? Keep loving, keep supporting, guys. Thank you very much for all this support. IBW rocks. Big round of applause for the man who brings a lot of exciting entertainment to the biking community. और एक बार की हाल चाल? Thank you, brother. Thank you for being part of the IBW 2022. And every year you participate with so much love and passion. And this community that you're building, I literally think it's awesome. Because इतना प्यार एक जगह देखने को जब मिलता है, तो दिल साफ हो जाता है. Definitely, this is all my. I want to thank IBW guys also for inviting me every year back to back. And this is something like मैं बोलता हूँ अपनी वीडियोस में दिवाली के बारे में. किसी को पता है? जैसे इंडियंस के लिए, हमारे लिए दिवाली इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे बाइकर्स का दिवाली क्या है? इंडिया बाइक वीक. अगर ये साल में एक बार ना होना, तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा रह गया, साल कंप्लीट नहीं हुआ. So this is our event party. So cheers for IBW.
Oh,